आप तो काफी इससे मुंसलिक रही हैं। जी जी। ये सबसे ज्यादा कब हुए थे मिसिंग पर्सन्स? ये परवेज मुशर्रफ के दौर में ज्यादा हुए थे, और फिर उसके बाद कंसेक्टिवली जब ये पीपल्स पार्टी का दौर आया तो ये चीज खत्म नहीं हुई बल्कि चलती रही। सिमिलरली इन पीएमएलएन, बीटीआई एंड देन कोलिशन गवर्नमेंट एंड देन केयरटेकर, तो थ्रू आउट द हिस्ट्री जब से 9/11 से लेके आज तक ग्राफ ऊपर नीचे तो होता रहा है। आजकल भी ये बात हो रही है? जी सर, हो रहा है, आजकल भी हो रहा है। आप एक सेकंड ठहरिए ना, इनको बात करने में। जी बताइए। जी सर, आजकल भी हो रहा है, ये केसेस आ रहे हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हो रही है। नहीं, जैसे शोएब साहिब साहब कहते हैं ना, किसी को उठाया फिर छोड़ दिया, वो वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं। हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं। जी जी। ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए। हाँ जी, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है। हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो हेबियस कॉर्पस की जुरिस्डिक्शन है। When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से। नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली सरकार सब पूछेंगे तो भाई फला मोहम्मद इदरीस कहाँ है, वल्द फला फला, तो वो फिर हमें जवाब देंगे ना। अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा वाबस्ता रही हैं, और तकरीबन 18 में से 15 साल में यहीं पर पेश होती रही हूँ। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीजें दौर बदलते जाते हैं ना। कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं आपने कहा 2005 में या 2002 में, ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना। तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दो बातें हो गई, देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें। हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम, नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी। एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं। तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट की पॉलिसी आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई रोक पॉलिसी रोक दी जाए, कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हम सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance. If you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. This is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element,
people are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. अब भी आपने अखबार में पढ़ा कल या आज के अखबार में था कि 6 नाई को मार दिया वजीरिस्तान में. जी जी जी. देखिए Come across. ये जहनियत जो लोग कत्ल करते हैं उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज का. इस दुनिया में तो चलें वो शायद कानून की गिरफ्त में ना आए, मगर आखिरत में क्या करेंगे? मतलब आखिरत में क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो देखिए ये स्टेट को भी ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा. ये कोई कोर्ट एक फैसले करके कुछ नहीं कर सकती है. That's right. जब तक ये पूरा मशीनरी इस माइंडसेट को चेंज ना करे. और जी ये पता नहीं क्या करने आ रहे हैं. अब आपने बलूचिस्तान में भी लोगों को कत्ल किया जा रहा है एथनिसिटी ग्राउंड पे. देखिए ये कोई सलूशन आज तक किसी ने कोई कत्ल वगारत से कुछ पाया नहीं है. तो नहीं हुआ. भाई कोई जेन्युइन आपकी बात है, आप आइए पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन करवाइए. जब इलेक्शन हुए थे लास्ट वाले में था चीफ जस्टिस बलूचिस्तान में, बड़ी मुश्किल से हमने सारे इलेक्शन कराए और कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते थे इलेक्शन हो, because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. ये एक अखबार की सुर्खी लगी, ऑर्डर पास हुआ, इससे कुछ नहीं होगा. I think the state Some needs to be definite inclusive. statement should be given by you in writing by the government. ये कमीशन जो था मिसिंग पर्संस का, ये वजूद में है या नहीं है? है sir, है. कौन हेड कर रहा है? It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court 100. in 2011. 11. So he should be now what, 77, 78, 77. आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं, रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन तो आप सामने आइए. ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड. शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क. मोहम्मद शरीफ विर्क ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी. और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई. जी ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर हाँ तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर. सेक्रेटेरिएट है पूरा. इतना आपका बजट कितना है? सर मेरे अंदाजा नहीं, उनसे बताओ सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं. मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा. तो आप करते क्या हैं? सर रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का. नहीं तो ये बस ये सर तनख्वाहें लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम भी सर कर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन. पता है ना. कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली भी करते हैं. कितनी रिकवरी कराई है आपने आज हमारे तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी. तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर किए, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया. फिर नहीं, कितनी रिकवरी मंथली, क्या है रेशियो आपका रिकवरी का मैं अभी आपको पर्सन्स का? ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ. लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग सर बता देता हूँ. नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा डेली होती है सर. क्या डेली होती है. डेली होती है? उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के सारे घर वाले, ISI, MI, IB सारे सब डिपार्टमेंट्स आते तो हैं. फिर रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैथ्स करने लगा हूँ सर. इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ. और 46 Dispose of का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं. अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं. सर कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ट्रेस्ड चैलेंज हमारे ट्रेस्ड किधर आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है. ये देखते हैं
नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर वो बाकी है। ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन हैं आपके रिकॉर्ड में, ये ऊपर लिखी हुई फिगर टॉप पे ना बता दीजिए ना। जी। ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं इसमें हुए? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें, जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाने केस में कस्टडी में है। असल में सर ये चार तो ये शायद ये इसका मतलब ये है। रिपोर्ट इसमें नहीं है ना जो। अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सर वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ, G91। ये क्या घर है? नहीं सर ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर, अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिया ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT एटी क्या चीज है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ये टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के या और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? जिस पायलट जब ये बना था अब 2011 आप में, इससे मुतमईन हैं या नहीं मुतमईन हैं? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश आप होते भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. ये हाँ? not at all. कोई sir. मुतमईन ये नहीं है, parent sir. dispose of की हैं. Honorable ने बड़ा ये एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं है? dispose of जो है इसमें हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता दें। satisfied, sir. Not at एक all. सेकेंड, एक सेकेंड। इत्तेदाद साहब, आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं नहीं, बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन? हद तक है। नहीं सवाल से मुतमईन, बस ओके। अच्छा, एक रईस ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो हमारे पास मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। सुने, आप देखिए, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ आप रहे हैं ना, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास ये- फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? जी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो सर 2005 से- ये मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम कोर्ट आपको ने। ईयरली बनानी चाहिए ना, जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है। आप यही नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके नहीं पास? सर पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे अच्छा, हुए। ये 3 लोगों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन जई साहब और जावेद इकबाल साहब। और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं वो कराची में करते हैं, उसी इनका केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग कराची बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते अच्छा, हैं। और रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और ये फ्रंटियर। यही मेंबर हैं फिर? जी 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 5 लोग हैं, हाँ जी। 4 लोग हैं? जी हाँ, हाँ 4 हो गए जी बिल्कुल। आर दे पेड और दिस वॉलंटरी वर्क?
ये सब पे होते हैं सर, हाँ? पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेते हैं ना सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह है, यही है ना? उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? तो क्यों करके जो है नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ जी ये अटॉर्नी जनरल साहब से उनका पैकेज तो वही होता है ना जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए। I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges. It is Whether quite post retirement common can they, if they are required to do any दोनों work. जो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। कोई भी रिटायर होता है जब नई जगह जाता है उसको वही पैसे मिलते हैं। हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन। So I was not. No, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, That's what I. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is because I recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? Interior, sir. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज दूसरा इंडिपेंडेंट ही है। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किसमें, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा। अभी हमारे एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस दफा किया है कैबिनेट ने। आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी। विजिट भी किया है वो। आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी। बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि अगर हम मंगा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन है, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे, अच्छा ये राशन की पिटीशन मैंने दायर की है। अच्छा। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अच्छा वो जरा मंगा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट किया है। स्टार बनाया हुआ ये कौन से केसेस जो क्लोज हुए हैं, ये रजिस्ट्रार साहब? क्या आप ये अपॉइंट कैसे हुआ है? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? Ji, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 and 2011. Forever? जी, वो फिर extension हो रही है from time to time. वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी। वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 134 of which file? ये है। My lord, I have this copy of the कहने notification. हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। ये नोटिफिकेशन दे दे दोनों 161 देना, मुझे देना जरा। उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजट नोटिफिकेशन है। My lord, मेरी ये जो जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011 dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced and some new cases have also been received.
And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP, retired Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात, बजट और ये? The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था नहीं, कमीशन। प्लस कर दिया है टू ट्रेस वेयरअबाउट 30 इनटू, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's, I mean, there's only this Commission will have its says that independent independent huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट करे, वो बढ़ा देते हैं। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, For it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons My lord, and जी। for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend lord, होते होते वो that is now कब में 2011 में। नहीं, tell us. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sir. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that, that contains really most of the answers to this issue. Page? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? GG. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. जी? He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. अच्छा, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice क्या नाम है? Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी, ये पब्लिक कब हुई है? Sir, ये फिर पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। Copies, कौन सा? sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले सर, अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना। जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में। तो मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे
is that this, of course, is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़े? Ji. Sir, page 61, on the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the Commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the Commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the Commission to such special bench for perusal of the honorable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the Commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters/cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of the court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so-and-so which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case/cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. Sir, this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial I inquiry, don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission, without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. The oral evidence of that. Now, the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. ये 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी. My lord, अब 2024 में है, इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन 750 my lord. कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 production orders have been issued to the relevant agencies. Only 51 have been complied with. If your lordship may kindly see एक production order जरा page 66 पे देख लीजिए.
That is the critical thing. That's the problem with the commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस ये सर, वो भी मैं आपको दिखाता मैंने हूं। इनको मार्क करके दिया है, मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया। नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस सर, ऑफ ये पूरी रिपोर्ट नहीं है। इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन। ये पूरी नहीं है। ये जो स्टार स्टेरिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए, तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए। सर, पूरी नहीं है। मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ। मैंने पूरी रिपोर्ट ठीक है, we read it. पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया। Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Ye commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक सेकंड, one step at a time. जी, Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं। जी, have a look at the production order. जी सर। मैं बोलना नहीं चाह रहा। सैंपल के तौर पर My lord. हाँ, तो वो ये कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है। सही बात है। तो इसका क्या हुआ फिर? Suspect है ना, कुछ suspect है। तो